Hi guys and welcome to Coders Point. So today we have our daily challenge question, which is 1 bit and 2 bit characters. So let's discuss about the question first and then after we will try to solve the problem. So जैसा कि हम देख सकते हैं, we have two special characters. The first character can be represented by 1 bit, which is 0. Second character can be represented by 2 bits, which is 1 0 or 1 1. Now, given a binary array bits that ends with 0, return true if the last character must be a 1 bit character. So what exactly it is, basically हमारे पास एक bits नाम का array होने वाला है और जिसके अंदर हमारे पास bits होंगी. दो तरह की bits हो सकती हैं जिसको हम character बोल रहे हैं. Either we have single bit character जिसमें हमारे पास सिर्फ 0 होने वाला है, और we have 2 bit character जिसमें हमारे पास either we can have 1 0 or we have 1 1. So what we have to return in this question is कि हमको हमारे पूरे एरे को ट्रैवर्स करना है, एंड आफ्टर ट्रैवर्सिंग द एरे वी हैव टू लुक द लास्ट कैरेक्टर. इफ इट इज अ सिंगल बिट कैरेक्टर देन वी विल रिटर्न ट्रू. इफ इट इज अ 2 bit कैरेक्टर देन वी विल रिटर्न फॉल्स. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. ओके गाइस, सो सी, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी आर गोना फॉलो टू सिंपल रूल्स. फर्स्ट इज, अगर हम पूरे एरे को ट्रैवर्स करने वाले हैं, सो लाइक इफ वी हैव दिस एरे 1 0 0 1 0. So what we will do, we will check character by character. We will check all the characters and then we will see it is a single bit character or one or a 2 bit character. And how we will check that? So uske liye we are gonna follow two simple rules. If we get 0, then we will move 1 step. If we get 1, then we will move 2 step. Now what exactly it is? So let's see. तो अगर हम बात करें हमारे पहले एग्जाम्पल की, सो हमारा पहला एग्जाम्पल है 1 0 0. As we can see, it is its length is 3 and हमारा जो पहला करेक्टर है that is 1. So as we can see on 0th index अगर हम चेक करते हैं then we will get the 1. And as I told you guys, if we are getting 1 on our index, then what we are going to do, we are going to jump 2 characters with 2 index forward. So here we will jump 2 index forward, then we will reach to the second index, and on the second index what we are getting 0. Now इसके बाद हम आगे जंप नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज डेफिनेटली इट इज़ द एंड ऑफ आवर एरे. एंड एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, अगर हमको 0 मिल रहा है सो इट्स अ सिंगल बिट कैरेक्टर. सो इन दैट केस, बिकॉज दिस इज द एंड, ऑल्सो वी आर गेटिंग 0, सो वी विल रिटर्न हियर ट्रू. नाउ इन द सेम वे, अगर हम दूसरे एरे को कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, सो एग्जाम्पल नंबर 2 इज 1 1 1 एंड 0. अब इसमें भी हमको स्टार्ट करना है फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन विच इज 0th इंडेक्स, एंड एट 0th इंडेक्स वी आर गेटिंग 1. सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना जंप 2 इंडेक्स फॉरवर्ड. So after jumping 2 index forward, next index we will get is the second. Now on the second, so here we got the 1. After this we reach to this. Here also we have 1. So what we will do, we will jump 2 index forward. अब हम जब 2 इंडेक्स फॉरवर्ड जंप करेंगे देन वी विल रीच टू द 4th इंडेक्स, एंड डेफिनेटली 4th इंडेक्स तो हमारे एरे में है ही नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू केम बैक टू द लास्ट करेक्टर, एंड इन दिस केस लास्ट करेक्टर इज ऑन द 3rd पोजिशन विच इज 0. नाउ डेफिनेटली बिकॉज दिस इज नॉट द, आई मीन एज पर दिस लॉजिक विच वी आर यूजिंग, लास्ट 4th पोजिशन पे हमें कुछ मिला नहीं और 3rd पोजिशन पे 0 है, विच इज़ डेफिनेटली द पार्ट ऑफ द सेकेंड इंडेक्स, बिकॉज 1 के साथ इधर वी हैव 0 और वी हैव 1 1. सो इस केस में हमारे पास दो अलग अलग करेक्टर्स हैं एंड बोथ हैव 2 बिट्स, दैट्स वाई वी विल रिटर्न हियर फॉल्स. सो वी आर गोना follow this simple logic in our algo to solve this problem. Now let's see what is the solution of this problem. So we are simply gonna do one thing. We will write a while loop. For that, let me initialize, like for example I am initializing 0. I'm gonna calculate the length of my bits array, and then after what I will do, I will just simply write a loop, that is while I will start from the I and I will go till n-1. then after I will simply check अगर हमारे पास जो bits की position है उस current position पे, उस current index पे if I have 1, so as I said I will jump 2 steps forward, so I will simply add 2 in the index variable. Otherwise what I will do, I will simply jump 1 step forward, because अगर हमारे पास 1 is, so definitely we will have the 0, so I will just add 1. और लास्ट में what I will return, I will simply return
I is equals to n minus 1. Now let's quickly dry run this to see how this logic is working. So हम अपना पहला एग्जांपल ले लेते हैं, and what was that? That was 1 0 0. So if we will see this 1 0 0, so as per this logic n will be 3, and our loop is gonna start from 0 and it will go to 3 minus 1. So our loop will start from 0, it will go to up to 2. Now first character we are getting here is bits 0, which is definitely 1. So I will increase. Previously I was 0 and now I will be increased by 2, then it will become 2. Now what next we are gonna do? Next time जब लूप हमारा रन करेगा, then in that case 2 लेस देन 2, जो कि गलत हो जाएगा और लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा. और अगर हम उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट पे आते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट इज 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 विच इज़ ऑल्सो 2. सो इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, और जो कि ठीक भी है क्योंकि लास्ट करेक्टर जो हमारा इस एरे का है दैट इज़ 0 विच इज़ अ सिंगल बिट करेक्टर. इन द सेम वे अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं इसमें, so let me just quickly erase this one. So example number 2 is 1 1 1 0. So let's quickly run this as well. So length हम निकाल लेंगे. Again in this case our length will be 1 2 3 4, so it will simply get 4, and our loop will run from 0 and it will goes up to the 4 minus 1 3. Okay, now we will simply check first time जब हमारा loop चलेगा तो we will check that if bits 0 is 1 or not. So definitely it is 1. फर्स्ट पोजीशन पे हमें 1 मिल गया तो हम 2 स्टेप जंप कर जाएंगे. 2 स्टेप जंप करने के बाद i की जो मॉडिफाइड वैल्यू होगी दैट विल बिकम 2. नाउ देन आफ्टर व्हाट वी आर गोना चेक अगेन, जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो वी विल सी कि जो बिट्स की सेकेंड पोजीशन है इज इट 1. सो या दैट इज ऑल्सो 1. दिस इज 1. सो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, एंड राइट नाउ वी आर हेयर. सो अगेन फिर से वही सेम चीज़ होगी, i को हम 2 टाइम्स जंप करा देंगे एंड दिस टाइम i विल बिकम 4. नाउ अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा सो लूप विल बिकम 4 लेस देन 3, सो विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, हमारा लूप चलेगा नहीं. और रिटर्न स्टेटमेंट इज i इक्वल्स टू n माइनस 1. नाउ करंट वैल्यू ऑफ i इज 4, सो 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 विच इज़ 3, और जो कि रॉन्ग है. सो इस केस में हम रिटर्न करने वाले हैं फॉल्स. सो that is how this entire logic is working. Now let's quickly execute this logic over the LeetCode and let's see what is the result. Now let's quickly run this logic and see what is the final output. Test cases pass होते हैं कि नहीं होते हैं. Let's see. So we can see both the test cases are passed. Now let's submit and check कि remaining test cases pass होते हैं कि नहीं होते हैं. And congratulations guys, we have successfully submitted the question, and that is how we can solve this question. So yeah, I hope you guys like the video. Now let's meet in tomorrow in the next question. Thank you.